हेलो दोस्तों, मैं मीनाक्षी वर्मा वेस्टर्न ओवरसीज़ से आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल इनविटेशन दिया है मैंने। वेस्टर्न ओवरसीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर प्रदीप बाल्यान आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं एंड इसके साथ साथ मिस्टर मुरली कृष्णा जो कि वूसुंग यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया से स्पेशली आज हमारे पास आए हैं इस स्पेशल सेशन के लिए, जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टडीज़ इन साउथ कोरिया, द सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम देयर, द करियर ऑप्शंस लेटर ऑन, और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वाई साउथ कोरिया, वाई वी शुड चूज साउथ कोरिया एज अ कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। सो मेरा पहला सवाल जो है हमारे जो गेस्ट हैं मिस्टर मुरली कृष्णन। सो सर, वेलकम टू दिस शो एंड बहुत सारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं वो आपसे बहुत सारे सवाल जानना चाहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ बिकॉज यू आर कमिंग स्ट्रेट अवे फ्रॉम साउथ कोरिया। सो जहाँ पर एक नॉर्थ में हम बैठे हैं, यहाँ पर एक स्ट्रीम चल रही है कि एवरीबडी इज more inclined about Canada or Australia. So why somebody should think about South Korea as a country to settle down? Before firstly I would like to thank the Western Overseas Meenakshi actually for inviting me for this discussion, a short discussion, especially of why is study in Korea and Woosong University. To just give you a background, my name is Professor Murali Krishna. I am from Woosong University. I act as the Director of International Affairs for the region and as well as for the other regions in Asia. So to just tell you actually, Meenakshi, why students have to come and study in South Korea. See, the first steps that anyone has to take up before he goes and studies abroad is that they have to categorize what type of country is basically South Korea is. South Korea is categorized under the developed nations. Apart from USA, UK, Canada, Australia and Germany, all these countries, South Korea is in one of the top developed nations globally. So that's one important thing that everyone has to keep in mind. It is not an emerging market or it is not a developing nation. It's a developed nation. It has huge infrastructure. The second thing that anyone has to keep in mind why they have to think of South Korea is that if you look at innovation, South Korea is the #1 market, in innovation. It's all the brands like Samsung, LG, Hyundai, Kia are all from South Korea. So that's one important thing that you have to keep in mind. It's innovation. They're the top ranking countries globally. Third thing is that the employment rate of Korea is more than 96%, which you don't see them in any other countries. That's an important thing that you're seeing, especially on South Korea, where it's a much attracting factor. The fourth parameter is that, the important thing that anyone has to keep in mind is mainly about, the security, right? As students and parents, everyone will be concerned of security. A man or a woman can walk on the roads at 1 o'clock. That's an important thing. So that's in that perspective, On the other hand, the last part I would say is that you have better return on investment. See, everyone, when they go for an education, they always look at, I want to invest for something, how much return I will get. So here in South Korea, as the population is decreasing, the opportunities are increasing. See, you get your return backs probably in 3.5 years. So that's one opportunity why definitely South Korea is a good location for any student or anyone who wants to really come and study in South Korea. सो आई होप दोस्तों आपको ये जो सर ने इन्फॉर्मेशन एक शेयर करी है आपके साथ वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो मैं वेस्टर्न ओवरसीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर प्रदीप से भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सर आप भी अपने लेवल पे कुछ और इनपुट्स देना चाहेंगे बच्चों को? देखिए, जैसे सर ने बताया है, पहली बात तो थैंक्स जो केम हियर फॉर वेस्टर्न ओवरसीज़ और आप हमारे लिए सेमिनार कर रहे हैं टाइम टू टाइम। सेकेंडली मैं बताना चाहूँगा कि वूसुंग यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, बट उससे पहले साउथ कोरिया की बात हो रही है। जैसे सर ने बताया कि डेवलप कंट्री इनोवेशन में साउथ कोरिया वर्ल्ड पे राज करता है। जैसे हुंडई कार उनकी है, ठीक है, किया, इसके अलावा आपका सैमसंग, एलजी, तो मतलब ये ब्रांड जो हैं ये पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हैं। सबसे बड़ी बात जो सर ने बताई सिक्योरिटी, मतलब वहाँ पे किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और लड़कियाँ सेफ हैं, रात को 1 बजे भी बाहर निकल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर कहीं मिलती हैं तो वो साउथ कोरिया है। तो दैट्स द रीज़न साउथ कोरिया आज के डेट में बहुत प्रमोट हो रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट बुला रही है। दोस्तों, जैसे सर ने बताया, ये बात सच भी है क्योंकि पॉपुलेशन कम है, दे नीड द मैन पावर एंड दैट्स द रीज़न। एक ही रास्ता निकलता है कि स्टूडेंट वीज़ा पे बच्चा वहाँ जाए, जाके वहाँ पे सेट हो, क्योंकि स्टडी के बाद यहाँ पे PSW भी है और स्टार्टअप कंपनी के नाम से इमिग्रेशन है, वहाँ पे एक नया प्रोग्राम भी लॉन्च किया है जिसकी हम लेटर बात करेंगे। सो ये एक बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, जो भी बच्चे करियर बनाना चाहते हैं साउथ कोरिया में जाकर उनके लिए। तो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू, लाइक यू आर रिप्रेजेंटिंग वूसुंग यूनिवर्सिटी, सो व्हाई वूसुंग यूनिवर्सिटी, व्हाट आर द एंट्री क्राइटेरियाज, व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स you are
offering. So we just want to have something in detail about the same. So to just give you especially a little bit information more of Woosong University. Woosong University is a university which has been started in the year of, the foundation has been started in the year of 1954, and right now we are in 2018. Great. From 2004, we have been offering all the complete the bachelor's programs, the master's programs, and the PhD programs are taught completely in English. So that's one unique thing that you see about Woosong University, is that most of the institutions in Korea are still in the transformation phase. We are one institution which have completely transferred most of the programs completely in English. The second thing is that, an important thing is that, apart from our Korean thing, 95% of our faculty are completely, international faculty. They are not from Korea. They are completely international faculty. So that's one important thing. We are trying to do that. The third thing is that this is a multicultural environmental school, and you have more than students from 50 countries. So that's an important factor, which also makes, you will see a lot of students, you have professors from 30 countries. The other thing actually is that students have the option of getting scholarship for their tuition fees, which is ranging from 30% to 100%. So that's another important thing, students will be able to get, especially for the tuition fees. And as a part of the study program, if they wanted to study in any of our 300 university partners, the students can go and actually do this education for one semester in abroad in one of our partner universities. We have other things from the exchange programs. We have dual degree programs with Australia, UK, Canada, and other parts of the world, and USA. We are associated with top universities like Georgia Tech, Arizona State University. We are cooperating with IIT Hyderabad and all the top institutes in India also. So it's basically just giving you, you get a quality education at the same time, the education is completely offered in English, and we have programs right starting from bachelor's, master's and PhD programs. मीनाक्षी, that's a good news. जैसे सर ने बताया कि भाई तो सबसे बड़ी बात है कि साउथ कोरिया बच्चा जा रहा है तो लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं होगी, सारे के सारे प्रोग्राम इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं। और साथ साथ में कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम एक बच्चा बैचलर या मास्टर स्टार्ट करता है, एक इंडिया से बच्चा जाता है तो ठीक है कि लोकल लैंग्वेज नहीं समझ पाता, तो कोरियन लैंग्वेज भी साथ साथ करिकुलम में है, मतलब सब्जेक्ट्स वाइज उनको कोरियन लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है। और 95% जो फैकल्टीज हैं वो इंटरनेशनल लेवल की हैं, मतलब इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो दैट इज द गुड थिंग। वुसोंग यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी और यंग यूनिवर्सिटीज हैं, इनके पास सारे प्रोग्राम्स हैं, बैचलर इनके पास है, मास्टर इनके पास है, और इवन के पीएचडी भी इनके पास है, और स्टडी कंप्लीट करने के बाद पीएसडब्ल्यू भी अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है स्कॉलरशिप, हर एक स्टूडेंट को चाहिए स्कॉलरशिप। और जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं अगर वो बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि 30% से लेके 100% तक ये लोग स्कॉलरशिप देते हैं। पैरामीटर्स आई वांट टू आस्क टू यू, व्हाट इज द पैरामीटर फॉर स्कॉलरशिप सर? See, the scholarship is based on 3 important parameters. One is basically that it will be based on the grading, how much grades they have got in the high school, how much grades they have got in their bachelor studies. The second parameter would be on the IELTS score. We will be looking at an IELTS at the bachelor's level of 5.5. At the master's and PhD level, we look at 6 band. The third important parameter that we will be looking at basically is how he performs in the interview, and how his communication skills are, and how his motivation levels are. Interview will taken by your staff. So the interview will be done by our admission committee. Okay. One would be a person from the admission office, and one would be a person from our faculty from the department. So it will be done by 2 people. Post after that, we take a decision and we offer the admissions for the eligible students. तो फ्रेंड्स, इसे गुड न्यूज़ के जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उनको स्कॉलरशिप मिल रही है 30% से लेकर 100% तक। और जो क्राइटेरिया बताया है, एक तो आपकी ग्रेड, जो आपके मार्क्स हैं, परसेंटेज हैं, 10th में कितने हैं, 12th में कितने हैं, बैचलर्स में कितने हैं या मास्टर्स में कितने हैं, आप किस प्रोग्राम में जा रहे हैं। तो जैसे अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो आपके 10th और 12th की ग्रेड देखी जाएगी, अगर मास्टर्स में जा रहे हैं तो अगेन बैचलर और उससे नीचे आपकी 12th की मार्क्स देखे जाएंगे, ऐसे ही पीएचडी के लिए आपकी ग्रेजुएशन वाले। तो आपके ग्रेड कितना है, ग्रेड के साथ साथ आपका आईएलटीएस स्कोर, आईएलटीएस में आपने कितना स्कोर किया है, लाइक 5.5 एंड मिनिमम as per them कि भाई they need the 5.5 band for the bachelor program and for the master and PhD you require 6 band। 5.5 बैंड पे कनाडा आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम वीजा सक्सेस रेट है, और एक आज की डेट में 5.5 बैंड पर अगर बैचलर्स बच्चा दैट इज अ गुड थिंग। और सबसे बड़ी बात, दे आर ओपन माइंडेड। अगर एक बच्चे की इंग्लिश अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं और इंटरव्यू में बच्चा पास होता है तो विदाउट आइल्स भी आपको एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो बैचलर्स के लिए 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है और मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए 6 बैंड की रिक्वायरमेंट है। तो आपके ग्रेड्स, आपका आइल्स स्कोर
और इवन कि दे विल टेक द इंटरव्यू ये लोग लेंगे, तो इंटरव्यू में आप किस तरीके से अपने आप को परफॉर्म करते हैं, उसी बेस पे ये डिसाइड होगा कि आपको 30% मिलेगा, 40% मिलेगा, या 50 मिलेगा, या 70 मिलेगा, या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो आपको 100% तक की भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो दोस्तों वूसोंग यूनिवर्सिटी आज हमारे साथ है, और वूसोंग यूनिवर्सिटी में हर टाइप के प्रोग्राम, तो सर आई वांट टू नो कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम यू आर ऑफरिंग। See, we have two departments or two faculties of schools. One faculty, which is actually, or the college, what we have is Endicott College of International Studies, which offers bachelor's in global management, which offers bachelor's in international studies. We have bachelor's in technology studies, which is focusing on software innovation of artificial intelligence. We have the bachelor's in technology studies, which is focusing on data science. And this is basically what we offer under Endicott College of International Studies. Under Seoul International School, we offer bachelor's in hospitality management, culinary arts, food and restaurant. We offer in media and communications, healthcare, service management, railroad transport, and we offer, media and communication. So these are some of the programs that we offer at the bachelor's level and Seoul International School. And when it comes, especially at the master's level, at the Endicott College of International Studies, we have the master's in global management, we have master's in international studies, and at Seoul International School, we have master's in hospitality management, we have master's in culinary entrepreneurship, and these are the two programs that is offered, especially at Seoul International School under the master's level. And the PhD level, we have the master's in global management, we have the master's in hospitality and tourism. Normally the PhD is for a 2.5 years duration for the global management, for the culinary entrepreneurship, or entrepreneurship actually, or hospitality management tourism, it's mainly for 3 years. The master's is normally for 2 years under the Endicott College of International Studies, and Seoul International School is for 1 year and 1.5 year. The bachelor's in normal is for 3.5 years to 4 years. तो इट्स ए गुड न्यूज़ यार कि आप बैचलर्स में 3.5 साल, मास्टर्स 1 साल से लेके 2 साल, अगर हम पीएचडी की बात करें तो आपकी 2.5 ईयर से लेके 3 ईयर तक की आपकी मास्टर पीएचडी प्रोग्राम्स हैं। तो 2.5 ईयर में आपने बताया ग्लोबल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट, 3 ईयर की पीएचडी प्रोग्राम था। इट्स ए गुड न्यूज़ कि पीएचडी आपको 2.5 से 3 साल में, बैचलर्स आपकी 3.5 साल में, और आपकी मास्टर्स जो है वो 1 ईयर से लेके 2 ईयर तक कंप्लीट होती है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी मास्टर प्रोग्राम है। तो दोस्तों इनके पास सारे प्रोग्राम्स हैं, चाहे आपने 12th की है, 12th में कोई भी स्ट्रीम रही है, चाहे आप आर्ट से हैं, या आप बिजनेस से हैं, या आप नॉन मेडिकल से हैं, या आप मेडिकल से हैं, दे हैव ईच एंड एवरी प्रोग्राम्स। इसी तरह से मास्टर्स में इनके प्रोग्राम्स हैं, और पीएचडी में जैसे मैंने बताया कि 2 प्रोग्राम्स हैं, जिसमें आपका ग्लोबल मैनेजमेंट एंड होटल मैनेजमेंट। So please, next yes, question. sir. So, sir, next question arises here is what after education, completing education. So, what are the post-study visa facility available and the settling down, the PR part? Okay. Yes. See, there are two things that I can really share, especially when it comes to post-employment opportunities. One is that, see, as I mentioned earlier, the population of Korea is coming down, it's decreasing. So there's a need for quality manpower in South Korea. Yes. One of the things is that as a part of the quality manpower, one of the steps that at the moment right now the government has taken is that one is with respect to offering something as a D10 visa. Students who have finished their masters can normally get a D10 visa up to 2 years period. So they initially get for 6 months, which will normally be extended later on depending on the need for them up to 2 years time. For a bachelor student, they normally get starting from 6 months, it goes on for 1 year. That's perspective of normally for a job seeker visa. Recently, the Korean government has come with another thing where they want to encourage startup companies. So so they want to encourage a lot of new startup companies to come and invest in Korea. So under the scheme, they have something. If you are able to basically start a company, and the government is ready to fund the startup company, at the same time they're ready to also give them something like an immigration visa for them to have a permanent settlement, especially in Korea. So this is a new development that is happening up to attract companies and individuals to come and invest in Korea and have a better career, especially. And this is mainly given an option for students who complete with bachelor's and master's studies. ग्रेट न्यूज़ फ्रेंड्स, जैसे सर ने बताया कि अगर आपने बैचलर्स की है तो
तो आपको 1 ईयर का जॉब सीकर वीज़ा है, पहले 6 महीने का मिलेगा, 1 ईयर तक वो एक्सटेंडेबल है। अगर आपने मास्टर्स की है तो अगेन वो D10 वीज़ा 2 ईयर का, पहले 6 महीने का, 2 ईयर तक एक्सटेंडेबल है। साथ साथ में इन्होंने नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, दैट इज स्टार्टअप कंपनी। स्टार्टअप कंपनी का मतलब वहाँ की इमिग्रेशन चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यहाँ पे बिजनेस फैले, और उसके लिए वो चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर आए। एंटरप्रेन्योर का मतलब यहाँ पे ये है कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पे ग्रेजुएट हैं, जिसने बैचलर और मास्टर्स किया है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इस प्रोग्राम के तहत, दैट इज स्टार्टअप कंपनी। आप अपना प्रपोजल गवर्नमेंट को देंगे, प्रपोजल आपको गवर्नमेंट को बहुत अच्छा लगता है तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प भी करेंगे फाइनेंशियली। अदरवाइज आपका बिजनेस आपने अगर वो हेल्प भी नहीं करते, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ये जो स्टार्टअप कंपनी का जो प्रोग्राम है ये लीडिंग टू PR है, परमानेंट रेजिडेंसी है। एक्चुअली दे वांट कि भी स्टडी कंप्लीट करके बच्चा वहां पे रहे जॉब सीकर वीजा पे, या फिर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करके परमानेंट रेजिडेंसी ले ले। सो प्रदीप सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि PR के लिए लगभग कितना समय लगता है बच्चे को वहां पर? आई थिंक मिस्टर मुरली इज द परफेक्ट वन टू टेल अबाउट सो इट। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गेट द PR? In general, basically, if you look at actually according to the requirements of Korea, a person basically has to stay in the country for 6 years continuously. Okay. If a person, if he stays in the country for 6 years continuously, then at the end of the 6th year, he has to basically take up a Korean language exam. And if he's satisfying the requirements of that Korean language requirement, automatically he will be given option to actually apply for the permanent resident thing in the country. Okay, so as you have already mentioned that Korean language will be a subject during their studies only. Yes. So at the time of PR, they won't feel any problem facing that examination? Actually, if you look at the curriculum of our bachelor's programs or master's programs, Yeah. Korean language is actually a part of the curriculum. Okay. You will be having a Korean language course in every semester. Good. So that by the time they graduate from the bachelor's, they should be in a position to speak local language fluently, and they should be able to satisfy the industry requirements. So I think that should be sufficient for them to actually really get nice. into the industry, get into the option of the settlement opportunities for them. Yes, sir. तो एज पर मुरली सर, जैसे सर ने बताया कि 6 साल तक अगर आप वहाँ पे लीगल आपका स्टे है तो यू आर एलिजिबल फॉर PR। मतलब 6 साल आपका लीगल स्टे होना चाहिए, और साथ साथ में आपको कोरियन लैंग्वेज का एक टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, तब आपको PR मिलेगी। तो देखा जाए एक छोटी सी कैलकुलेशन करें तो 3.5 साल की बैचलर है, और उसके बाद 1 ईयर का जॉब सीकर वीजा है, तो 4.5 ईयर तो यही हो जाते हैं। साथ में जैसे जॉब सीकर्स में अगर उसको जॉब मिलती है, एम्प्लॉयमेंट उसको मिलती, जॉब मिलती है, तो एम्प्लॉयर उसको कॉन्ट्रैक्ट देता है, वो 1.5-2 साल का अगर उसके पास हो जाता है तो लीगल स्टे उसका 6 ईयर का हो जाता है। मींस स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर PR। या जो जॉब सीकर जो यहाँ पे बात करिए कि जो आपका क्या नाम है बिजनेस अगर बच्चा करता है स्टार्टअप कंपनी के तहत, तो उसमें तो अगर उसका बिजनेस सेट हो जाता है तो डेफिनेटली उसमें PR उसको जल्दी मिल सकती है। Sir, one more thing I want to ask, like after completing the education, do they need to search for the relevant job, or they can opt for any job, whatever is possible for them? Normally, in general, there is no any specific requirements, right? Okay. It is completely purely based on the interest of the individual. So I would say that it's up to him what career he wants to choose. As long as an employer comes and gives him an offer for it, he is actually eligible to choose for anything. It's not something specifically that he has to have, you has to only go for this stream. So he's eligible to choose his own streams. जैसे ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कंप्लीट करने के बाद बच्चे को PR लेने के लिए रिलेवेंट जॉब करनी होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपने होटल मैनेजमेंट किया है, आप किसी और फील्ड में जा रहे हैं, नो वरी, आपका लीगल स्टे है 6 ईयर का, और आपके पास लैंग्वेज कोर्स का जो सर्टिफिकेट है, मतलब आपने जो टेस्ट क्लियर कर लिया, तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल फॉर PR। आपने बिजनेस किया है, बिजनेस मैनेजमेंट किया है, आप किसी और फील्ड में जा रहे हैं, आपने IT किया है, किसी और फील्ड में जॉब ले रहे हैं, मतलब आपने पढ़ाई कुछ भी की है लेकिन आप जॉब किसी और फील्ड में कर रहे हैं, डजंट मैटर, लेकिन आपका 6 ईयर का लीगल स्टे है, और साथ साथ में आपको जब PR लेनी है तो उस टाइम जो लैंग्वेज कोर्स जो बताया, लैंग्वेज कोर्स जो लैंग्वेज टेस्ट है, अगर वो आपका क्लियर होता है, डेफिनेटली यू आर एलिजिबल फॉर PR। So during studies, like other countries, Canada, Australia, New Zealand, students are getting working rights. So is there some option available in Korea also, South Korea also? In Korea, normally a student is allowed to work up to 20 hours per week. Okay. So the normal system is that they're allowed to work 20 hours per month. They'll be allowed for 80 hours. A normal employee is allowed to work 160 hours. So as they are studying, they would be given a right up to 50% of the study period of the working period. So they'll be allowed for 80 hours a month. Okay. So what is the minimum wages rate for South Korea? In general, it varies on what kind of jobs they would like to do. But in general, if you look at hotel industry, for example, I see an average somewhere between $7 to $8 is basically what they get.
And if you go to some other better things, maybe in the IT service industry, slightly it may change. The production services, the manufacturing sector will slightly change. But whatever I say is basically, the average rate. If you look at maybe in salaries, maybe in Korea, in general, a full-time salary person will get normally around $30,000 or more than that. So what is the employment rate in your country? See, in general, if you see in Korea, the employment rate is 96.2%. According to the data of CIA fact book, it's 96.2%. That is really good rate, rate. So we can say that whosoever will be going to Korea for their studies, they are having that option that they can easily settle down in this country and having a lot of job options available for them as per the employment rate already available in the numbers. So sir, there are another people who might be thinking about that. Is there any facility, spouse visa facility also, where they can settle down during their studies and all? Normally, students who really wants to come, they are actually eligible. Their family can apply for it. As long as they can prove that they have sufficient funds for the family, they have something called as a dependent visa. The students can get their family members, but they need to show the funds to make sure that they have the dependent person who's coming on the family, on the person, on the student is basically having sufficient funds to take care of their family. Means dependent can apply during with the student or after getting the student visa? They can normally apply in the starting itself, but it's always better that maybe let them come first there, let them settle down there. Once they settle down there, the studies and everything, it's better that then तो एज पर सर अगर आप स्पाउस पे भी जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो, बट उससे पहले आपको स्टूडेंट वीजा खुद लें और उसके बाद आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं. दैट इज द गुड थिंग. मींस लाइक आज की डेट में इफ यू टॉक अबाउट द कनाडा आल्सो, तो हम स्टूडेंट वीजा पे स्टूडेंट्स को पहले भेजते हैं, उसके बाद अगर उसे स्पाउस है तो डेफिनेटली बाद में उसको अप्लाई कराते हैं. इट्स अ गुड थिंग सर, इट्स अ गुड थिंग. So sir, dependent whosoever is going by dependent visa, so do they need to apply for the work visa there, or they will get some working rights directly? Normally, as long as actually they are on a dependent visa, they are dependent on their husband who's actually there, so they will be actually working as they normally get a dependent visa. But if they actually are able to find a job, a legal job, then probably they can apply for, the employer can give them a certificate or a letter where they can go to the immigration office to get them actually for getting a work permit. Okay. So sir, overall, as per the discussion which we have discussed in this communication, the first important thing is this is a developed country where all the students can get very good career options. Right? They can settle in technical field, they can settle in hospitality industry. They are having huge number of career options available in this country. So what is the future of you can say being a person, if I am settling in that country, I am getting the PR, so what kind of facilities government will be providing me, a candidate after getting the PR? See, in general, if you look at maybe Korea, Korea comes in the category of developed nations, as we discussed earlier. And they are a country which is more innovative, right? So if you look at all the innovations, the innovation, Korea is in the category of innovation, #1 ranking in innovation according to Bloomberg, where that is one thing where the country is more focusing towards it. So if you look at possibly, if you stay in the country, after a couple of years of time, you also get a pension. You get a pension there, so you have a secure income after you retire there. And basically the thing is that it is a highly developed nation. It is a very secure place. And the salaries are like, they are definitely more than $30,000. It's more similar to European countries or other parts of the world where you get a better salary there. So in this perspective, you look at that perspective, they get a good salary, which is in a developed nation. The cost of living is not so high compared to Europe and things like that. And the taxation rate in general, if you look at Korea, is not so high. It is approximately on an average level of 10%. Unlike other countries where the taxation rate is slightly higher, which will go on from 30% to 35%. Here the taxation rate is lower. Okay. So sir, can we discuss a little bit about the financials which are required, the fee structure, minimum fee structure, for the courses which your university is offering? My pleasure, actually. See, just giving you an idea basically about how much of the tuition fees in general. The tuition fees per semester, it varies on from $3,700 per semester. It goes on basically depending on the program.
And out of that, as we mentioned earlier, we give a scholarship ranging from 30% to 70% to 100%, depending on the program they have at the bachelor's level. At a master's level, we offer them from 30% to 50%, and PhD also a similar kind of a thing. So that's basically on perspective of tuition fees. When it comes to the perspective of hostel, we offer on-campus accommodation. So as a part of the on-campus accommodation, students will be eligible. They will be having a one meal included also, and approximately they are supposed to pay around $2,000 basically for their 1 year of accommodation fees on the university campus. If they wish to stay outside, they can definitely do that. But the university is more of an innovative campus, more of actually modern campus, and you will see more of a multicultural environment on the campus. Yes, and the medical insurance will be approximately $158 per year. Okay. Sir, kitna Indian student? How many Indian students are there in your university, and what are because being from India, right? Our students are looking for something. We are a diversified country, so we are looking for some teammates with whom they can gel there, and then they can also give value to their culture. Yeah. So. In general, at the moment right now, till now, the population of India has not been so high, very high. We have been focusing on other markets, but if you look at most of our students from India are mainly from Punjab, Haryana, Chandigarh. We have students from northern part of India, especially when it comes to Delhi, Mumbai, and we have a growing population also coming for master's programs towards mainly for the master's level, especially from southern part of India. So, and we have many students from Nepal, Bangladesh, we are showing interest. So, yeah. I mean, you are the student all over the world? Yes. So, it's a multicultural campus, which more than 50 countries. Wow, so, great news. Yeah. मतलब एक यूनिवर्सिटी में more than 50 countries के students हैं, तो definitely आप देख सकते हैं कि किस टाइप का environment वहाँ पे होगा. और फीस भी बड़ी nominal है. 3,700 per semester. I think there are 2 semesters in a year. Yes, 2 semesters. So you can say like $8,000 से भी नीचे फीस है और US डॉलर है, और उसमें भी ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं. तो it's a good news. And even कि there are 2 intake, March intake और March के बाद इनका October intake है. Deadline हमारी जनवरी, I think 5 जनवरी, 5 जनवरी is the deadline. तो जो स्टूडेंट नियरेस्ट इंटेक लेना चाहते हैं अपना मार्च का, तो वो 5 जनवरी से पहले वेस्टर्न ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच में जाके आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकते हैं, इसके अलावा अपनी फाइलिंग प्रोसेस करा सकते हैं. तो वेस्टर्न ओवरसीज की जो नियरेस्ट ब्रांच है वो चंडीगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, आपका सोनीपत या फिर आपका जलंधर एंड अमृतसर, जो भी नियरेस्ट ब्रांच है आप वहाँ ये काउंसलिंग लीजिए. साउथ कोरिया अगर आप जाना चाहते हैं तो वी हैव द डेडिकेटेड टीम, वी हैव द गुड सक्सेस रेट फॉर दिस कंट्री. तो आप आइए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ और मौका पाइए साउथ कोरिया में पढ़ाई करने का. तो सर एक बार दोबारा से आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी दोस्तों के लिए कि आप एक बार दोबारा से इंटेक्स के बारे में थोड़ा सा और इलैबोरेट कर दें. देखिए देयर आर 2 इंटेक, 2 इंटेक हैं. एक मार्च इंटेक है और एक अक्टूबर इंटेक है. मार्च इंटेक का मतलब ये लास्ट फेब में आपकी क्लासेस स्टार्ट है वूसोंग यूनिवर्सिटी में. तो 5 जनवरी डेडलाइन है. 5 जनवरी से पहले आपको सारा प्रोसेस करना होगा. और इसके अलावा अक्टूबर इनटेक है. तो प्रोग्राम सारे हैं जैसे सर ने बताया, मैनेजमेंट स्टडी, टेक्नोलॉजी स्टडी, इंटरनेशनल बिजनेस, कुलिनरी आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, मेडिकल सर्विस मैनेजमेंट जो कि आपका मेडिकल स्टूडेंट्स वालों के लिए है, रेल रोड इंटीग्रेटेड सिस्टम जो कि एक तरह से नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, मीडिया कम्युनिकेशन आर्ट, रेस्टोरेंट फूड सर्विस मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. इसके अलावा मास्टर्स में कुलिनरी एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट स्टडीज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टरिंग ग्लोबल मैनेजमेंट, मास्टरिंग इंटरनेशनल होटल मैनेजमेंट. और 2 इनके पास पीएचडी प्रोग्राम भी हैं जिनको ग्लोबल मैनेजमेंट और होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म के 2 प्रोग्राम्स हैं, तो जो कि पीएचडी प्रोग्राम्स हैं. तो इनटेक जैसे मैंने बताया आपका मार्च इनटेक है और आपका अक्टूबर इनटेक है. मार्च इनटेक बहुत नियरेस्ट है आपके पास, सिर्फ ये दिसंबर का महीना है. 5 जनवरी तक हमारी डेडलाइन है. इसके बाद हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर हम इनरोल करेंगे अक्टूबर इनटेक के लिए. तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, आप अपने फंडिंग के डॉक्यूमेंट के साथ, अपने आइल्स के साथ और पासपोर्ट के साथ वेस्टर्न ओवरसीज में आएंगे. फीस बहुत कम है और मेरिट बेस पे जैसे बताया कि मेरिट बेस और आपकी आइल्स को और आपके इंटरव्यू बेस पे ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं 30% से लेके 70% या 100% तक. तो बहुत रीजनेबल पढ़ाई है. 20 आवर्स आप काम कर सकते हैं. वैकेशन में यू कैन डू 160 आवर पर मंथ, मतलब एक तरह से आपको फुल टाइम काम करने की परमिशन है. स्टडी कंप्लीट करने के बाद बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स को 1 ईयर, मास्टर्स वालों को 2 ईयर का आपका
जॉब सीकर वीज़ा है, और जो स्टूडेंट्स अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके लिए आपको गवर्नमेंट को एक प्रपोजल देना होगा कि कौन सा बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो उसके बेस पे आप पीआर भी ले सकते हैं। और जॉब सीकर वीज़ा पे भी अगर आपने पीआर लेनी तो मैक्सिमम आपको 6 ईयर का आपको लीगल स्टे करना पड़ेगा, जिसमें आपकी स्टडी कंप्लीट हुई है, उसके बाद आपके पास जॉब सीकर वीज़ा है, उसके बाद आपके पास एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो उस बेस पर आपका वीज़ा एक्सटेंड होता है, तो उस बेस पे आपकी पीआर आ सकती है। तो वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट, बहुत डेवलप कंट्री है दोस्तों। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं, आप उनको भी यूट्यूब पे मेरे फेसबुक पेज पे देख सकते हैं कि उनका क्या फीडबैक रहा है। बहुत बढ़िया फीडबैक है, स्टूडेंट्स ड्यूरिंग स्टडी बहुत अच्छा अर्न करते हैं, और सारे प्रोग्राम्स इनके पास बैचलर्स के हैं, मास्टर्स के हैं, 2 पीएचडी भी है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। 2 साल तक का अगर बैचलर 12th के बाद अगर आपका 2 साल तक का गैप है एक्सेप्टेबल है, मास्टर्स के बाद बैचलर्स के बाद अगर 5 साल तक का गैप है उसमें आपने वर्क किया है जस्टिफिकेशन, तो डेफिनेटली आपका ऑफर लेटर आएगा, आपका एडमिशन होगा और आपका वीज़ा भी लगेगा। यस, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेंदी इन्फॉर्मेशन सर। और मुझे जहाँ तक पूरी उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपके मन में कुछ भी